So welcome in the semester 5, paper 1, Biochemistry and Plant Physiology. In this Biochemistry and Plant Physiology, total 4 units are there, and out of these 4 units, I have allotted the first unit. The first unit, it consists of the part of carbohydrates, lipids, amino acids, and the basics of enzymology, right? Means the first unit of the paper 1, it consists of most of the part of the basic biochemistry. The basic biochemistry, it is totally related with the metabolic activities of the cell. सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं, उन सभी कंटेंट्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है. जैसे कि हमें पता है कि दैट सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Inside this cell there are several organic and inorganic contents are present. The presence of various biomolecules inside the cell is called as cellular pool. जिसे हम cellular pool कहते हैं. And this cellular pool, it consists of various types of contents as like the micromolecules and the macromolecules. These micromolecules and macromolecules are involved in the process of metabolic activity of cell. जो कोई भी सेल होती है, whether it is a plant cell or whether it is a animal cell, तो plant cell हो या फिर animal cell हो, उनके अंदर में जो metabolic activities होती है, these metabolic activities are carried out with the help of the various types of biomolecules. These biomolecules are divided into the two main categories, that is the micromolecules and the macromolecules. Semester 5, paper 1, that is the biochemistry and plant physiology, it consists of the part of the first unit consists of the part of micromolecules and the macromolecules. इस पेपर में हमें पढ़ना है कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं कि जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है. तो चलो हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 में जो कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो द सेमेस्टर 5 पेपर 1 बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 1 कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स. आई थिंक आप लोगों के पास सिलेबस होगा, नहीं भी होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? So come to the point that unit 1, it consists of the first topic, that is the carbohydrates, second topic lipids, third topic amino acids, and next topic, that is the basics of enzymology. It is very important topic as a biochemistry point of view. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप लोगों को एंजाइम्स से रिलेटेड बहुत सारी मैकेनिज्म पढ़नी होती है. ठीक है, because this is the catalyst. Enzymes, these are the biocatalyst which helps to accelerate the activity of metabolic reactions. जो metabolic reactions होती है उनकी activity या फिर उनका रेट बढ़ाने का काम कौन करता है? That is the enzymes. The first topic, that is the carbohydrate. Paper 1, Biochemistry and Plant Physiology, Unit 1. So the first topic, that is the carbohydrates. So the paper 1, Unit 1, it consists of the first topic, that is the carbohydrates. Now you all are aware about these carbohydrates from your previous standards or the previous classes. जैसे कि हमें पता है कि carbohydrates, it is one of the important बायोमोलिक्यूल इनसाइड द सेल. ठीक है, कोई भी सेल जो होती है उस सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंड इट इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड द एनर्जी, राइट. ठीक है,
अगर हम देखें that biomolecules they are divided into the two main categories, that is the micromolecules and the macromolecules. The micromolecules like the carbohydrates and the lipids. ठीक है, you can note down, आप लोग note down कर सकते हो या फिर आप लोग एक फ्लो चार्ट जैसा फॉर्म कर सकते हो that the biomolecules which are present inside the cell, सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दैट इज द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स. Macromolecules like carbohydrates and lipids are also called as the fats. And the second type, that is macromolecules, they consist of the nucleic acid and the protein. Means you have now the flow chart. आप लोगों के पास एक flow chart बन सकता है on the basis of this distribution of the biomolecules. The biomolecules, it consists of the two types of categories, that is the micromolecules and the macromolecules. Micro and macro. Micro, that is the smaller molecules, which having the two examples, that is the carbohydrates and the lipids, which is the part of our unit 1. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पहला टॉपिक बताया मैंने आपको और सेकंड टॉपिक बताया लिपिड्स. नेक्स्ट टू द माइक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स के बाद में कौन आता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स. Macromolecules, it is having again two types, that is the proteins and the nucleic acids. Macromolecules, they are larger in size, that's why they are called as larger molecules. As like the macromolecules, these are the larger molecules, micromolecules are the smaller molecules. ठीक है, micromolecules जो होते हैं smaller molecules होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं. हमें जो पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ने हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग द टू एग्जांपल्स, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स. नाउ we'll get started with this carbohydrate. हम लोग कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे. we'll started with the carbohydrate. Carbohydrate in your syllabus, it should be consist of, यानी आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं तो पॉइंट्स के हिसाब से सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मींस व्हाट इज मीन बाय द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द प्रॉपर्टीज एंड द रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द रूल ऑफ carbohydrates. Next to the properties and role of carbohydrates, we have to study the classification of carbohydrates. The carbohydrates are divided into the three main categories, that is monosaccharides, disaccharides and the polysaccharides. Next to the classification of the carbohydrates, we have to study in short the structure of glucose and starch. शॉर्ट में हमें साइड बाय साइड, यहाँ पे अगर केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, बायो के साथ अगर केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, सो यू वी शुड हाउ टू स्टडी द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के जो कुछ मेन एग्जांपल्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज द ग्लूकोज एंड द स्टार्च. ग्लूकोज इट इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की दो मेन कैटेगरीज आती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक द स्टार्च एंड सेल्यूलोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन के साथ चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के. ठीक है, so what is meant by carbohydrate? Listen here, focus on the topic and just go through the proper attention. ठीक है, proper attentive रहेंगे. Related to the online classes, there are some important instructions. ये classes हम first time कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. That to attend and to perform these
online classes, you should have to be find out some isolated habitat. आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपके घर में ही या फिर आपके पास अगर घर में खेत वगैरह होगा तो आसपास में अगर कोई अच्छी जगह होगी, आइसोलेटेड प्लेस की जहाँ पे आप शांति से सुन सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, ऐसी जगह आपको फाइंड आउट करनी है. घर पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि खेत में ही जाना है या फिर बाहर ही जाना है. You can get that isolated habitat to concentrate or to focus on that particular topic. So let's just start with the carbohydrate. The carbohydrates, these are the organic compound. So the organic compound, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है? The organic compound which is made up of carbon, hydrogen, nitrogen and carbon, oxygen and carbon, hydrogen and oxygen. The organic compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio 1:2:1. ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है? So the organic compound which is made up of the carbon, hydrogen and oxygen, right? So the organic compound which is made up of the carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1 is called as carbohydrates. These carbohydrates having the basic chemical formula, that is CnH2nOn, right? This is just introduction. ये सिर्फ introduction है carbohydrates से related. We are not started the properties or these points which are focusing on your window. आप लोगों की विंडो में या फिर PowerPoint presentation में यहाँ पे जो points दिए हैं वो points अभी तक हम लोगों ने start नहीं किए हैं. We are just discussing the introductory part, that is the definition of carbohydrates. So the organic compound which is made up of the carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1. ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशियो होता है, दैट इज 1:2:1. इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, बेसिक केमिकल फॉर्मूला अगर हम कहेंगे, दैट इज CnH2nOn, राइट? सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गेट इट दैट व्हाट इज मीन बाय द कार्बोहाइड्रेट. सब लोगों ने समझ लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं करके, ठीक है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई कार्बोहाइड्रेट की, फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे. एंड यू शुड हैव टू, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यू शुड हैव टू कीप वन नोटबुक, ठीक है? आप लोगों के पास एक नोटबुक रखना है आपने, टू नोट दैट पॉइंट्स, ठीक है? चलो, तोशाली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे सब दिख रहा है यहाँ पे. कुछ लोगों के वीडियोस ऑफ है यहाँ पे. ये पहला ही लेक्चर है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे दैट यू शुड हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन whenever my class is going on. जब भी मेरा क्लास शुरू होता है तब आप लोगों ने वीडियोस ऑन रखने हैं टू रिकॉग्नाइज यू दैट व्हाट आर यू डूइंग एट योर होम. आप लोग आपके घर पे क्या कर रहे हो, ठीक है? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे वीडियोस ऑन रहते हैं, तो इट इज नॉट दैट, ठीक है? इट इज सिंपली फॉर द रिकॉग्निशन एंड दैट आई शुड हैव टू अवेयर दैट you are attentive in the classroom. So we are going to discuss that carbohydrates, these are the organic compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1, having the chemical formula CnH2nOn. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, but it is the online class. So you should have to be understand the each and every topic properly. आप लोगों को सभी points properly समझने. Then the carbohydrates are the most abundant organic compounds in the plant world. तो यहाँ पे लिखा है कि carbohydrates जो होते हैं वो most abundant organic compounds होते हैं in the plant world. Obviously, right? We are the students of botany. And we know the one of the great process, that is the photosynthesis. हमें photosynthesis पता है, ठीक है?
all the plants, they perform the process of photosynthesis, right? And we know that the end product of photosynthesis, it is in the form of carbohydrates. जो एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस का, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें अगर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डार्क रिएक्शन, दैट इज द कैल्विन साइकिल, we got the glucose, हमें क्या मिलता है, glucose, and glucose it is nothing but the carbohydrate. So they give the statement regarding the carbohydrate that carbohydrates are the most abundant organic compound in the plant world. सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई होता है प्लांट वर्ल्ड में, so that organic compound it is the carbohydrate, वो होता है carbohydrate. Come to the second point. They acts as storehouses of chemical energy. Means carbohydrates acts as a storehouses. Carbohydrates जो होते हैं वो storehouses का काम करते हैं of the chemical energy. Chemical energy in the form of, that is the glucose, the starch, and the glycogen. Then the chemical energy are the components of supportive structures in the plants, that is the cellulose. Then in the crustacean cells, that is the chitin, and the connective tissues in the animals, that is acidic polysaccharides, and are essential components of nucleic acid, that is deoxyribose. We use the word deoxyribose whenever we explain or whenever we designate DNA, deoxyribose nucleic acid, right? So again here that, sorry, the D stands for the D-ribose and 2-deoxy-D-ribose. It is again the part of carbohydrate. So all these contents, they are totally the part of carbohydrate. ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है, यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, देख रहे हैं हम लोग टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट. We are going to discuss the carbohydrate. Semester 5 पेपर 1 यूनिट 1. सेमेस्टर 5 में हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं, उसमें यूनिट 1 पढ़ रहे हैं. And unit 1, it gives the information related to the all the biomolecules, essential biomolecules. Essential biomolecules, they are divided into the two main categories, that is the micromolecules and the macromolecules. Micromolecules like the carbohydrates and lipids, ठीक है, carbohydrates and the lipids, and the macromolecules like the protein and nucleic acid. Here we are going to discuss the carbohydrates. हम लोग carbohydrates के बारे में discuss कर रहे हैं. हम लोगों ने definition कही है carbohydrates की, that is the organic compound which is made up of the carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1, having the basic chemical formula CnH2nOn. Then the carbohydrates are the most abundant organic compound in the plant world. इनका कहना ऐसे है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट abundant organic compound है plant world में. They acts as storehouses of the chemical energy. Means the carbohydrates acts as storehouses of the chemical energy in the different form. अलग-अलग form में ये chemical energy के form में present रहती है. That is for example glucose, starch, glycogen. Then they are the components of supportive structures. Means carbohydrates are the components. Carbohydrates जो होते हैं वो components होते हैं, components of the supportive structures in the plants. Plants में जो supportive structures होते हैं, for example जो tissues वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन supportive structures में भी हमें ये carbohydrates मिलते हैं. तो उसका एक best example दिया है, that is a cellulose. Just थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को carbohydrates की दो main categories बताई थी, that is a simple carbohydrate and a complex carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोगों को बताया था ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज द स्टार्च एंड सेल्यूलोज. सो हियर द सेल्यूलोज इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, सेल्यूलोज किसके केस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के केस में, राइट, ठीक है. एंड वी ईट द प्लांट्स, प्लांट्स को हम खाते हैं. फाइनली हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं फिर, सेल्यूलोज.
This cellulose it is degraded by the various metabolic activities. ये degrade होता है हमारे बॉडी में. चलो आगे बढ़ते हैं. Components of the crustacean cells. ठीक है, जो crustacean cells होते हैं, for example the lichens के बारे में आप लोगों को सुना है. ठीक है, lichens, right? The lichens it consists of one of the component that is the chitin. And this chitin, you know that it is commonly called as the fungal cellulose. इसे fungal cellulose कहा जाता है. ठीक है. And connective tissues in the animals. Animals में जो connective tissues होते हैं वहाँ पे भी हम लोगों को carbohydrates के कुछ content मिलते हैं. For example, that is acidic polysaccharides. Polysaccharide word आ गया यहाँ पे, इसका मतलब it is a carbohydrate. Because the carbohydrates are classified into the three main categories, that is the monosaccharide, disaccharide and polysaccharides. And the carbohydrates are also the essential component of nucleic acid. Nucleic acid, that is there are two main types of nucleic acid, that is the DNA and RNA. The DNA it is commonly called as the wonder molecule, जिसे हम लोग wonder molecule कहते हैं या फिर life molecule कहते हैं. ठीक है, तो ये जो लाइफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे भी आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डी राइबोज एंड 2-deoxy-D-ribose. That we designate that DNA it is a deoxyribose nucleic acid. DNA को हम क्या कहते हैं? Deoxyribose nucleic acid. So the DNA also consists of the carbohydrate. So these are the different introductory points which are related to the carbohydrate. Move to the next point. Carbohydrates make up about 3/4 of the dry weight of plants. यहाँ पे हम लोग plants के बारे में ज़्यादा focus कर रहे हैं. ठीक है, so the carbohydrates make up about the 3/4 of the dry weight of the plants. 3/4 यानी ज़्यादा से ज़्यादा part. ठीक है, यानी plants का near about 75-80% part जो होता है, ठीक है, ड्राई वेट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट स्लाइड. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट पॉइंट, द एनिमल्स including the humans get their carbohydrates by eating the plants, but they do not store much what they consume. Right? It is right. मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया that plant it consists of the cellulose. Plants में क्या होते हैं? Cellulose, right? ठीक है. So the cellulose it is one of the type of carbohydrate. एक टाइप का एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, तो इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पे पॉइंट डाला है, देखो. Animals including the humans get their carbohydrates by eating the plants, but they do not store much what they consume. ठीक है, एनिमल्स साथ ही में ह्यूमन बीइंग्स भी जो होते हैं गेट देयर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी उन्हें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एनिमल्स को जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दिस कार्बोहाइड्रेट इट इज ऑब्टेन्ड बाय ईटिंग द प्लांट्स. प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद या फिर प्लांट्स को खाने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. ठीक है, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम लोग ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते. ठीक है, वी कैन नॉट स्टोर for the longer time inside our body. Then less than 1% of the body weight of animal is made up of carbohydrates. ठीक है, उन्होंने बताया कि less than 1% जो होता है, less than 1% of the body weight of animal is made up of carbohydrate. And carbohydrate का concentration बहुत कम होता है animal body weight में, लेकिन ये essential होता है. ठीक है, it is essential for the normal growth and the development of animals. For the photosynthesis, an endothermic reductive condensation of carbohydrate or carbon dioxide requiring the light energy and the pigment chlorophyll. इनका कहना ऐसे है, for the endothermic reductive condensation of carbon, मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिडक्टिव कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस दैट इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट इज reduced into the carbon it is reduced into the carbohydrate. So for the photosynthesis, the endothermic reductive condensation
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायरिंग लाइट एनर्जी एंड अ पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। यानी जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है तो वहां पे किसकी जरूरत होती है, कार्बन एंड द लाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया है that the organic compound which is made up of the carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2 2:1. So here is the carbon, कार्बन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन जो होता है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड द क्लोरोफिल, ठीक है। लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की हेल्प से वो रिड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बोहाइड्रेट्स। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तोशाली आवाज आ रही है मेरी? समीक्षा आवाज आ रही है? ओके, डोंट मैसेज मी इन द चैट बॉक्स में मैसेज नहीं करना है। जब भी बोला जाएगा आप लोगों को तभी मैसेज करना है, ठीक है। सो दैट द कार्बोहाइड्रेट्स, there is some disturbances due to some network problem, but all of the candidates, in about 45 to 50 candidates, they are listening my voice clearly. So that less than 1% of the body weight of the animal is made up of carbohydrate. For the photosynthesis and endothermic reductive condensation of carbohydrate or the carbon dioxide, requiring the light energy and the pigment chlorophyll. यानी यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपली अगर कार्बोहाइड्रेट अगर बनाया जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड द क्लोरोफिल। सो दिस इज द chemical reaction, you very well know that, as you are the student of botany, this is the process of photosynthesis, nothing but photosynthesis, CO2, H2O, then energy, sunlight, in the presence of chlorophyll, they produce the CN, H2N, ON, which is the बेसिक केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था आप लोगों को कि दैट बेसिक केमिकल फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट दैट इज CN, H2N and ON, and there is a release of oxygen as a byproduct. Now move towards the next slide. Now come to the classification of carbohydrates. As we discuss in the introductory part, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था, द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। The carbohydrates are mainly divided into the two main categories, that is the simple sugars and the complex sugars, or we can say that the simple carbohydrates and the complex carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, that is the simple carbohydrates and the complex carbohydrates. The simple carbohydrates, it consists of the monosaccharides and the disaccharides, and the complex carbohydrates, obviously it consists of the different types of polysaccharides. The polysaccharides having the examples, they give the example here, that is the starch, then glycogen and the cellulose. So these are the different types of the polysaccharides, which is the part of complex carbohydrate. So simply here is the representation of the classification of carbohydrates. ये representation दिया है यहाँ पे carbohydrates के classification का, तो आप लोग simply ध्यान में रख सकते हो कि that what are the two main categories of carbohydrates. आप लोगों को just simply अगर किसी ने question पूछा वाइवा में, या फिर आप लोगों को किसी इंटरव्यू में पूछा गया, आप लोग अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हो CSIR लैब में, या फिर किसी बायोलॉजी रिलेटेड या फिर लाइफ साइंस बेस्ड किसी लैब में, लेबोरेटरी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, स्पेशली अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड जाते हो, तो यू हैव हैविंग द चांस, ठीक है, आप लोगों के पास यानी चांस हो सकता है कि दैट द पर्सन मे आस्क द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल, ठीक है। किसी बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है, वेदर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, whether it is a lipid, protein or any other type, ठीक है। So here the classification of carbohydrates, simply it is divided into the two main categories, that is simple carbohydrates and the complex carbohydrates, ठीक है। So I think आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
नाउ सम इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को अभी टास्क करना है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू गो इन योर चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स में जाइए और वहां पे सिर्फ एक वर्ड आपको लिखना है, दैट इज प्रेजेंट। यू शुड हैव टू राइट द प्रेजेंट ओनली। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिस्टम नेम चेंज करने के लिए कहा था, बहुत से लोगों ने सिस्टम नेम चेंज नहीं किए हैं, कर लेने हैं। प्रेजेंट करके लिखना है सब लोगों ने चैट बॉक्स में जाके। It is a part of your presenting, so you should have to enter in this chat box. It is the today's presenting. Near about 45 plus candidates are present in our classroom. Then I think you should not having the interruption during my class. ठीक है, आप लोगों को कोई interruption नहीं आया होगा। आप लोगों का जैसे आप लोगों ने ग्रुप पे बोला था कि that Zoom app will be crashed. It is not crashed in our classroom. ठीक है, यहाँ पे crash नहीं हुई है। ठीक है, या फिर कोई disturbances भी नहीं आया है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आई होगी, बट near about 90 to 80 to 90% स्टूडेंट्स गेट माय वॉइस क्लियरली। ठीक है, सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दी होगी, ऐसे मैं मानता हूँ, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मानकर हम लोग बाकी के लेक्चर भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन योर प्रेजेंटिंग एंड थैंक यू फॉर योर valuable time and your response to my online class. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। बाकी का टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों के पास टाइम टेबल है, तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी मैसेज टू मी, देन मैसेज मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। सब लोगों को बाय।